अबे वीडियो है। अंगूरी देवी को पेश किया जाए। आज हम अंगूर खाते खाते अंगूरी देवी का मजा लेंगे। Hello friends, my name is Sujit Sarode and welcome to my channel. So today is 11th of February 2018 and it's around 9 in the morning, and right now we are at Darjeeling. Actually I am going for a short ride to one of the tallest waterfall of Odisha, Khandadhar Waterfall, and we are already covered half the distance and we are at Darjeeling right now. This place, if you know, if you haven't seen my second vlog, I have covered this place. तो जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखा है वो प्लीज़ जाके देखिए। उस वीडियो का लिंक मैं यहाँ पे आई बटन पे दे दूँगा। सो वी हैव ऑलरेडी कवर्ड 50% ऑफ द जर्नी एंड फ्रॉम हियर इट्स ऑलमोस्ट 40 किलोमीटर्स मोर टू गो। सो वी शुड बी रीचिंग देयर इन द नेक्स्ट 1 आवर। और आज मेरी ये सोलो राइड नहीं है, देयर आर फ्यू फ्रेंड्स हु आर राइडिंग विथ मी। अबे इधर देखो, Say hi. Hello. अब ठीक है, चलो। Okay, so we have fueled up and there are few friends who will be joining us. वो आगे हमारा वेट कर रहे हैं। So today in total we are 7 people riding on 5 bikes, and it's 7:30 in the morning. The plan was to leave at around 7, but the problem is कि राउरकेला में 24 hours पेट्रोल पम्प नहीं होता है। उसकी वजह से कल रात में पेट्रोल पम्प बंद हो चुका था। तो वी थॉट कि इट्स बेटर कि हम लोग यहाँ से ही पेट्रोल फिल करके जाए, बिकॉज ऑन द वे वी डोंट नो पेट्रोल पम्प मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। यू नो पेट्रोल का क्वालिटी भी काफ़ी डिफर करता है इन रिमोट प्लेसेस। सो दैट्स वाई वी आर रनिंग अराउंड 30 minutes लेट, बट दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। वी विल मेक इट ऑन टाइम। Walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for regrets. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe, trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. साली कुत्ते। मैं वेटर नहीं हूँ। द चाय वाली। देखो देखो इधर, रुको रुको, कौन? चाय वाली। और मीना चाय कैसी है? मीना बोले गरम है। ठीक है। कैसी लगी चाय आपको? A1+ वाले बुड्ढे वाली चाय तो ली, लेकिन ठीक ठाक है। फिर भी ठीक है, पी जा सकती है। पी जा सकती है। Show any fear. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe, trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes
10:30 in the morning and we have reached Khandadhar Waterfall. This, as you can see, is the entry point to this waterfall. From here it is going to be a 30 minutes of trek towards the base of the waterfall, and we reached here pretty early because the roads were very good. I was expecting to reach here at around 11:15, but we reached here pretty early because roads were amazing. So now we'll be going at the top. बोलो यार मैं गिर जाऊं। अपनी जीत हो उनकी यार घूम जाओ। मीना पीते हुए मुझे लगा भी करेगा। अरे इसका ले लो। Hi, this is Richa Sudhira। ये टॉमी है, टॉमी। और ये है टॉमी। मार लेते यार, कम है। चुप है। मेरी बात मान लो, शॉर्टकट मार लेते, कम है थोड़ी देर की। चल हाँ मेहनत है। अरे यार शॉर्टकट, तू तो ट्रैकिंग के लिए आई ना। हाँ तो शॉर्टकट क्यों चाहिए? मैंने तो ना लॉन्ग ट्रैकिंग थे। फाइनली वी हैव मेड इट टू द बेस ऑफ दिस वाटरफॉल, और यहाँ पे आते आते हमारी हालत पूरी पतली हो गई थी। द ट्रैक लीडिंग टुवर्ड्स दिस वाटरफॉल इज़ नॉट एट ऑल ईजी एंड इट इज़ गोइंग टू टेस्ट योर पेशेंस। हम लोग कैसे तो भी करके, वैसे तो आधे घंटे का लग रहा था हमको कि आधे घंटे का ट्रैक होगा, बट यहाँ आते आते मुझे पर्सनली अराउंड 50 मिनट्स लगे यहाँ आते आते। तो दिस इज़ दी वाटरफॉल।
I've reached my room and the ride was smooth. In total we have covered around 200 kilometers to and fro, and because the roads were good तो ज़्यादा कुछ पता नहीं चला, and even the weather was very pleasant, so it helped us in our ride. Talking about the place, I must say it's a beautiful place, but having said that, there are few things which I'd like to share with you. So if you're planning a ride to Khandadhar, please be aware that it is a remote place where you won't find restrooms or a decent restaurant where you can have a proper meal, so it's always better if you carry some stuff with you. Secondly, the trek to the actual base of the waterfall can be very demanding to few people depending on their age and fitness level, so please ensure you always carry a bottle of water with you. So it will help you. Some good to know stuff. Even after making at the top, there are steep rocks जिसमें से उतर के आपको नीचे जाना है, and there is this trench or pond like thing जहाँ पे सारा waterfall का पानी accumulate होता है, and that is the place where you can actually enjoy the waterfall. So not everyone are able to pass through that steep slope and then again climb back while returning. So मैंने काफ़ी लोगों को देखा जो वहाँ तक पहुँचे but actual पानी में नहीं जा पाए. So it can be a disappointment for few people. Overall, I feel this place has a great potential and इसको government में थोड़ा ध्यान देना चाहिए, इसको develop करना चाहिए in order to attract tourists from different parts of the country. So with that, I'm ending my vlog here. So if you enjoyed watching my vlog, don't forget to give it a like, and I'll see you in the next vlog. Till then, subscribe करो यार.